Manu and welcome to my YouTube channel. So yeah guys, this is my first video on my YouTube. So आज की जो वीडियो है वो है एवरीडे मेकअप लुक एंड या गाइज आई लव मेकअप एंड या दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो. सो मैंने सोचा कि मैं अपना एवरीडे मेकअप लुक आपके लिए लेके आऊँ. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने रोज़ वाटर से. सो या वाटर लगा लिया है तो अब हम करेंगे मॉइस्चराइज. अपने चेहरे को जो है अच्छे से मॉइस्चराइज करना सबसे मेन काम है मेकअप में. तो सबसे पहले हम मॉइस्चराइज करेंगे. तो या अपने चेहरे को एकदम अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है. तो अब हम करेंगे प्राइमर. तो आई एम यूजिंग दिस हुडा ब्यूटी प्राइमर. तो या हमने प्राइमर लगा लिया है एंड नाउ फोर्थ स्टेप इज़ कंसीलर. सो गाइज आप अगर कंसीलर यूज़ करेंगे सो या गाइज आपका जो लुक है वो नो मेकअप लुक हो जाएगा. सो गाइज मैं यूज़ कर रही हूँ मियोन का SPF 15 कंसीलर. दिस गाइज मैंने कंसीलर लगा लिया है एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस हुडा ब्यूटी ब्लेंडर. मैंने अपना कंसीलर लगा लिया है. तो अब मैं यूज़ करूँगी ये परसोनी का फेस पाउडर. ये ऑलमोस्ट खत्म. आई एम यूजिंग दिस. आई एम यूजिंग दिस लाइनर 24 hours perfect stay. So yeah लाइनर लग चुका है एंड नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये काजल जो कि है डार्क रंग का है. तो नाम यही लिखा है डार्क रंग का काजल है. मस्कारा. सो ये है ब्लू हेवन का. ऑलमोस्ट हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है एंड नाउ लास्ट स्टेप इज मियोन की लिपस्टिक है. ये आप कोई सा भी ब्रांड ले लीजिए. ये मियोन लिपस्टिक है. इसका शेड है 22. इसका शेड 22 लिखा है इसका. नाउ ये ऑलमोस्ट ये भी ख़त्म हो गई है. सो या इसे मैं थोड़ा अपने चीक्स पे भी अप्लाई कर लूँगी. मेरा पूरा मेकअप हो गया है एंड नाउ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और डोंट फॉरगेट टू माय सब्सक्राइब माय चैनल. And bye bye.